ने बहुत सारी फेस, तो वो इनके यहाँ पर तो बल्कि और ज्यादा नेटवर्क का इशू होता है। और जब मैडम ने इस एनआरसी को बनाया है तब उस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन था, वहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन लगी हुई थी और पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए इन्होंने इस एनआरसी को कंप्लीट किया, इस मॉड्यूल को बनाया, इस मूव प्रोग्राम को रन भी किया। मैम, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। It was really amazing, and I always believe a woman can do it. Only a woman can do it. बिल्कुल बिल्कुल, only a woman can do it because we are always facing challenges. तो आज का हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और आप सब लोगों के बीच में हम स्वागत करते हैं आज के हमारे बहुत ही लर्नड रिसोर्स पर्सन और आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हैं, प्रोफेसर हैं और स्वयं की कोऑर्डिनेटर भी हैं। जैसा मैंने बताया, अभी आपने होम साइंस के अंदर एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट भी कर रखा है, इसको पूरा डेवलप किया है और जेंडर इश्यूज पे पिछले 30 साल से काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही हैं, बहुत सारे वुमेन के मल्टीपल इश्यूज, माइग्रेंट वुमेन के ऊपर भी इनका काम रहा है जो कि पब्लिश भी हुआ है और एलुमनाई की कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी है सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज के और बहुत सारी एक्टिविटीज ये यहाँ पर एनएसएस के अंदर भी करवाते रहते हैं। बहुत ही प्रोफेसर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड करते हैं हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एचआरडीसी के हमारे विश्वविद्यालय में। और हमें बहुत खुशी है मैम कि आप हमारी महिला यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ रहे हैं और मौका मिला हमें आपको जानने का और आज आपसे सीखने का। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए टू स्टार्ट विद द प्रोग्राम इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर संदीप कुमार जी को। जी मैम, good morning to one and all present today. I am Dr. Sandeep Gura, Assistant Professor of Economics from CR Kisan College, Jind. First of all, I would like to thank our Director, Saifali Nagpal ma'am, HRDC, Bhagat Phool Singh University, Khanpur, and her whole team. Today, our resource person is Dr. Neeru Sharma, Professor from University of Jammu, and I welcome her on the behalf of HRDC, Bhagat Phool Singh University, Khanpur, and all participants of this workshop. Dr. Neeru Sharma is working as professor in University of Jammu, and she has been working on gender issues, particularly for the development of education, health, and learning of women for the last 30 years. She is the director of Center for Women Studies, University of Jammu, convener NSS campus units, University of Jammu, chairperson campus cultural committee, UGC SWAM coordinator, University of Jammu, coordinator ARPIT program in National Resource Center in Home Science, Ministry of Education, Government of India, subject expert UGC, UPSC and HPSC, subject expert for promotion of faculty under CAS promotion of under CAS Universities of Kashmir. She has been the supervisor of 15 PhDs on gender issues and more than 50 dissertations on gender issues. She has actively participated in highlighting the gender issues at international, national, and regional level at various forums through seminars, conferences, and publications. Madam, I welcome you on the behalf of HRDC, Bhagat Phool Singh University, and all the participants. Now I request our director, ma'am, to direct us for today's program. Thank you, ma'am. Thank you. मैम की इजाजत हो तो स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बताइए। आपने मुझे बोला 10 से 1 बजे तक, ब्रेक कब देनी है? ब्रेक बीच में आपको जब ठीक लगे मैम आप दे दीजिएगा इन लोगों को 10 से 15 मिनट का। ठीक है, थैंक यू सो मच।
थोड़ी सी करेक्शन है, मैं एट प्रेजेंट डायरेक्टर नहीं हूँ वुमेन स्टडीज की. आई वॉज अ डायरेक्टर. I was also head of the Department of Home Science for 2 sessions. So पोस्ट तो मैंने बहुत होल्ड किए और जेंडर पे बहुत काम किया, जैसे आपने सुना. बट स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ अ लर्नर. तो जब शेफाली जी ने मुझे बोला कि आप रेफरेंसिंग स्टाइल्स पे बात कीजिए, so again, I started learning. It was a great experience in last few days of learning again. So whatever I've learned, I'm going to share with you. Though referencing to हम जब भी PhD या dissertations या publications करते हैं, we are always following some of the other style, whatever the journal requires. But again, going back and looking at the technicalities and whatever has happened over all these years, with the coming on of online referencing managers, reference managers, as I said. So I'll be, before I start, a word about, uh, I can present now. Yes, you may share the screen, ma'am. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. Yeah, it's visible. Okay. So before I start, how to cite and what to cite, I would like to take your attention to the UGC care. I hope all of you are aware of it. Are you able to see this? University Grants Commission, Yes, UGC ma'am. care. Yes, ma'am. So all of you must be familiar with the, because सबका promotions due होते हैं और सबको publications चाहिए उसके लिए और quality publications चाहिए. तो UGC ने उसके लिए ये एक UGC care portal develop किया है जहां आप register करके you can take a look at all the journals which are आप जहां आपको publication करनी चाहिए, जहां आपने की है वो अगर केयर लिस्ट में है या नहीं, वो भी यहीं पे हम सर्च कर सकते हैं. और इसके यहाँ पे कुछ ये एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च क्वालिटी करके और बाकी ये जो इनिशिएटिव्स हैं यूजीसी केयर के, ये दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं. इट इज कि ये बहुत रिगरस एक काम किया है यूजीसी ने बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ प्रिडेटरी पब्लिशिंग. हम पीछे एक ट्रैप में फंस गए थे बिकॉज यूजीसी हैड सेड कि हमें पब्लिकेशंस करनी है, वी रिक्वायर दीज मेनी पब्लिकेशंस फॉर गोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, फ्रॉम टेकिंग द प्रमोशन फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड सो ऑन. सो उस चक्कर में वी वर ट्राइंग टू पब्लिश, ऑल ऑफ अस. मैं आपका नहीं कहूंगी, उनका नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी all of us were trying to gain those numbers rather than quality. And in gaining those numbers, हम plagiarism या predatory publishing के चक्कर में फंस गए. And I'll come later to this. UGC has drawn this a long list of requirements for a journal to enter into the UGC publication list. बिफोर दैट उन्होंने यूनिवर्सिटीज को बोला कि आप एक लिस्ट दीजिए, तो यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो भी लिस्ट थी वो उनको दे दी और उसमें सारे प्रिडेटरी जर्नल्स भी आ गए. प्रिडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. ये पैसा ऐंठते हैं. एक एक ऑटो के अंदर भी वो पूरा पब्लिकेशन, आजकल मुश्किल नहीं है ऑनलाइन पब्लिकेशन साइट्स बनाना. एक आप साइट बनाते हो और उसको उधर से पब्लिकेशन शुरू कर देते हो. तो हम सुनते थे कि एक एक ऑटो में भी पब्लिकेशन यूनिट्स खुले हुए हैं. तो घर घर में पब्लिकेशन यूनिट स्टार्ट हो गए और वो पैसा कमाने वाले यूनिट्स थे. और जब हम उनको रेफर करते हैं तो वो क्लोन्ड जर्नल्स में आते हैं. इफ यू लुक एट दिस UGC website, it has a list of cloned journals.
तो जब आप क्लोन जर्नल्स में देखते हैं तो आप देखते हो कि वो जर्नल जो था उसको जो परमिशन मिली थी इट वाज अ प्रिंट जर्नल, और अब उसने क्लोन करके वो एक वो बन गया है, ऑनलाइन जर्नल में आ गए, क्योंकि आप देखोगे इसमें 100 आर्टिकल होते हैं एक एक जर्नल में। आप आज की डेट में पिछली डेट की पब्लिकेशंस कर सकते हो। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हमें इस चक्कर में नहीं गिरना है, एंड वी हैव टू कम आउट विद क्वालिटी पब्लिकेशन सो दैट आवर यूनिवर्सिटी बेनिफिट्स, आवर रिसर्च कम्युनिटी बेनिफिट्स। हमारी नर्व की रैंकिंग, हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स लो क्यों है? क्योंकि हमारी पब्लिशिंग जो है इतनी क्वालिटी जर्नल्स में नहीं हो रही। तो क्वालिटी जर्नल्स में एक जो रिगर मेंटेन किया जाता है वो ये है कि आप जो है रेफर जो है किसी का भी आर्टिकल कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जहाँ पे आप खुद पब्लिकेशंस पढ़ोगे तो ऐसे आपको आपको खुद पता चल, एज अ टीचर जब आप अपने बच्चों का काम पढ़ते हो, अगर उनका रिसर्च वर्क पढ़ते हो या उनका डिसर्टेशन में जो उन्होंने बनाया है या पब्लिकेशन देखते हो, तो आपको समझ आ जाती है कि ये बच्चे ने नहीं लिखा, ये बड़ा बुकिश है, और या ये जो वर्ड्स हैं ये इस बच्चे के नहीं हो सकते। यू कैन असेस योर चिल्ड्रन। सो उसी तरह रेफरेंसिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और करेक्ट रेफरेंसिंग करना और उस बंदे को क्रेडिट देना जिसका काम हम साइट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सबको पता है कि प्लेजरिज्म जो है 10% से नीचे ही अलाउड है, ऑलमोस्ट इट शुड बी अराउंड 1 to 2% ओनली एंड नॉट मोर देन दैट। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम किसी का काम कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं जैसे उरकुंड है या टर्नटिन है या और भी हैं, वो एकदम से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सोर्स कॉपीड है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट शुड आई साइट एंड हाउ शुड आई साइट। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइट करना बहुत आसान है। आप देखोगे मैंने अपनी हर स्लाइड में जहां से मैंने कॉपी किया है या जहां से मैंने कोई इमेज लिया है उसको साइट किया है, और ये बहुत जरूरी है व्हेन यू डू एकेडमिक पब्लिशिंग। Though I had to take help of these things because I'm not very proficient in drawing things. So आप ले सकते हो, but then you have to cite the source. So जो आप ये योग के अंदर देख रहे हो ये एग योग की शेप में है। योग के अंदर जो है येलो कलर में, दिस इज अ जर्नल आर्टिकल, बुक चैप्टर, न्यूज़पेपर स्टोरी, डिसर्टेशन, बुक, ई बुक और मैगजीन आर्टिकल को साइट करना बहुत आसान है। मगर बाकी जो आसपास आप देख रहे हो जैसे टीवी शो, मूवीज, क्योंकि हम अलग अलग डिसिप्लिन से आई बिलीव, कोई साइंसेस से होंगे, कोई आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से होंगे, कोई हिस्ट्री, तो हर एक के अलग अलग तरह के साइटेशन सोर्सेज होते हैं। और वो जो साइटेशन सोर्सेज हैं उनको रेफर करना अपने टेक्स्ट में, अपने रेफरेंसेस सेक्शन में या बिब्लियोग्राफी, जो भी आपका राइटिंग स्टाइल है, तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। सो it's easy to do the yellow colored ones in the yoke and a little difficult to uh, quote all other sources, and that's what I'm going to talk about, how to cite or what referencing styles to use in your research. तो पहले तो ये समझना जरूरी है व्हाट इज बिब्लियोग्राफी एंड व्हाट इज रेफरेंसिंग। क्या ये एक ही हैं और आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सो व्हेन यू लुक एट, हम लोग बहुत लूजली कई बार यूज कर देते हैं बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस को, बट दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। बिब्लियोग्राफी होती है all the resources you have used while researching or while making a text or making a paper or a dissertation or a thesis। जो भी आपने पढ़ा है वो आप साइट करते हो इसमें। You may include texts that you have not referred to directly in your work, but which have had an influence on your ideas. So, references वो होते हैं जो आप साइट करते हो टेक्स्ट में। All the sources that you have referred to in your text,
It's a reference list which may be ordered in alphabetical order of authors' names or numerically depending on the referencing system you are using. So अगर हम आगे जब बात करेंगे डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स की, तो अलग अलग स्टाइल्स में अलग अलग तरह से रेफरेंसिंग की जाती है. और ऑल ऑफ दोज हु आर पब्लिशिंग विल आल्सो नो कि हर जर्नल का एक कंट्रीब्यूटर्स पेज होता है, जहां पे वो डिफाइन करते हैं विच रेफरेंसिंग स्टाइल दे वुड बी फॉलोइंग. आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रीडेटरी पब्लिशिंग, और ये जो है हमारे स्कॉलर्स और हम लोग भी इस ट्रैप में से फंस चुके थे. एंड यूजीसी केयर हैज मेड अ बिग एफर्ट टू टेक अस आउट ऑफ दिस ट्रैप. And if you want to know more about it, you have to go to the UGC Care portal, and then you can read about so many things. There are books, there are journals, there are interviews with the person who is responsible for all this UGC Care work, Dr. Bhushan Patwardhan. और उनके पर देख के आपको पता चल जाएगा how to identify a predatory journal from a good journal, फ्रॉम अ क्वालिटी जर्नल. क्योंकि आपको जब नर्फ का डेटा भरना है या नैक का डेटा भरना है, आपको पूछा जाता है स्कोपस में कितनी पब्लिकेशंस है आपकी लिस्टेड, आपकी वेब ऑफ साइंस में कितनी है. आपको ये गूगल स्कॉलर को भी इतनी मान्यता नहीं दी जाती जितनी स्कोपस और को दी जाती है. तो इसका मतलब जरूरी है कि वी मैच दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिशिंग and match those benchmarks of publishing if we want our university to be ranked higher. Because हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक डिसाइड करता है कि उसको कितनी ग्रांट मिलेगी, और हमारी यूनिवर्सिटी का जो ग्रांट मिलेगी तो हमारी भी डेवलपमेंट होगी. सो इट्स अ राउंड प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस दैट गोज राउंड एंड राउंड, कि जितना आप ज्यादा पब्लिश करोगे अच्छे जर्नल्स में उतना हाई आपकी रैंकिंग होगी. जितना हमारे बच्चे अच्छे प्लेस्ड होंगे, पब्लिश करेंगे, वो भी पब्लिकेशंस के बेसिस पे ही अच्छी प्लेसमेंट्स पाएंगे, और दे विल अगेन मतलब यू गेट अ गुड ग्रांट, यू गेट अ गुड नेम, आपकी रैंकिंग हाई आती है एंड यू फील हैप्पी कि हमारी रैंकिंग हाई है. So like in Jammu University, we are amongst the top 100 universities of the country, but again, not the world. World की ranking में बहुत पीछे हैं हम लोग. Why? Because again, something has to be done about the numbers, about the quality of what we bring out, about the patents, about our works that are cited by other people. ये हमारी रेफरेंसिंग जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने आप को एक वर्ल्ड के फोरम में ला सकते हैं, दुनिया में हमारी पहचान बने. तो ये जो पीछे शुरू हुआ था पे एंड पब्लिश, जो जर्नल आपसे पब्लिशिंग कॉस्ट मांगता है वो जर्नल उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, और उसकी कॉस्ट बहुत हाई है. अभी पीछे एक मैं जर्नल देख रही थी, 7,000 या 6,500 करके उसकी पेपर फीस थी, पेपर पब्लिशिंग फीस. अच्छे जर्नल्स जो होते हैं वो एक आपको रिगर में से निकालते हैं, उनका रिव्यू प्रोसेस बहुत रिगरस होता है और वो ज्यादा कॉस्ट नहीं करते. और जो आप, क्योंकि जरूरत है टीचर्स को, मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ अपनी टीचर्स एसोसिएशन की, पब्लिकेशंस की वजह से बहुत सारे टीचर्स का करियर स्टॉल हो जाता है क्योंकि उनकी पब्लिकेशन यूजीसी केयर लिस्टेड नहीं है. अब यूजीसी केयर लिस्टेड जो जर्नल्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में अभी एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि बीच में जो प्रोसेस आ गया था पे एंड पब्लिश का, उसकी वजह से वो इतने एडिक्वेटली हमारा जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो नहीं हो पाया. सो क्वालिटी का बिल्कुल इट्स अ total disregard for the quality of content, research integrity, and peer review. So referencing a cited work is also a part of research integrity. And danger of inadvertently citing references from predatory journals. और हम अगर हमारे पेपर में predatory journals के references होंगे तब भी हमारा
quality of publication गिर जाएगा. So we have to be very careful about those predators who are lurking all on web. See that they should be UGC listed in the current list. They should not have been listed previously. अगर अब remove कर दिए गए हैं, there must be some lacunae or some thing that they are lacking in. That's why they are being removed from the list. And another thing, referencing हमें किससे बचाता है? Plagiarism, because किसी का work copy करना without acknowledging them is very bad. It surmounts to cheating. It surmounts to stealing. So it's that bad. It's considered that bad. और आपने देखा होगा पीछे किसी एक कंट्री के राष्ट्रपति ने किसी का उसका जो थीसिस था वो प्लेजराइज था, उसने किसी का कॉपी किया हुआ था और उसको उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और ये हमें भी उठानी पड़ेगी अगर हम कट कॉपी पेस्ट करके अपनी पब्लिकेशंस बना रहे. And sometimes this plagiarism is intentional, purchasing a research paper online or sharing a test with a friend. And sometimes it is unintentional, that is improperly citing a source in a paper or using an author's word without giving her or him credit. तो आप अगर किसी की लाइन कॉपी करते हो, किसी के वर्ड्स कॉपी करते हो, you have to give that person a credit, because all whatever is available online and whatever is even open source, you have to acknowledge the person. You don't steal another person's work. You don't do it intentionally or unintentionally. So आज जैसे मैंने आपको बताया कि UGC केयर इनिशिएटिव हमारा इंडियन इनिशिएटिव है, Consortium of Academic and Research Ethics, that is what is CARE stands for, and it was launched on 28 November 2018. और इसके बाद जब अब जो जर्नल्स हैं उनकी बहुत केयरफुल स्क्रूटनी होती है ताकि वो प्लेजरिज्म को नहीं प्रमोट करते हो, प्रीडेटरी पब्लिशिंग को नहीं प्रमोट करते हो, और इससे पहले जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स थे वो बहुत सारे रिमूव कर दिए इन्होंने. और आप इसके बारे में अगर डिटेल में देखना चाहते हो, यू कैन गो टू यूजीसी केयर साइट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रीडेटरी जर्नल्स. दे हैव आल्सो given various articles how to identify predatory journals. So most important key to remove plagiarism is to cite your sources. जहां से आप कॉपी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कोट ले रहे हैं, you quote directly from a source without using quotation marks and adequately acknowledge the source. Sources include books, magazines, newspapers, journals, journal articles, web pages, lecture notes, letters, movies, music, lyricals, depending on your subject, whatever subject we are from. In some cases, even a single word, if it's distinctive, constitutes plagiarism, if not properly attributed with quotation marks and some sort of citation. अब जैसे मेरा subject है human development. We have theories of human development given by Freud, Erikson. अगर मैं उनकी कोई टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ, जैसे अगर मैं फ्रॉइड की टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ, ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात करती हूँ, तो विदाउट साइटिंग अबाउट, बिकॉज फ्रॉइड इज अ वेल नोन पर्सन, बट अगर मैं किसी और की जैसे वाइगोत्स्की ने यूज किया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये टर्म मैं यूज करती हूँ अपनी बना के, तो everyone is going to make a fun of me. I'll be the laughing matter. So I have to give credit to the person who has put in so much effort to write a paper, to develop a theory, or to do some experiment in the field, or experiment के जरिए उसने कोई terminologies या papers publish किए हैं, तो I must give a due credit. You paraphrase a source without acknowledging it. आप बेशक उसका वो कर लो, लफ्जों में बदलाव ले आओ, मगर आप उसको एक्नॉलेज जरूर करेंगे. यू कैन नॉट चेंज. हम कहते हैं कि वर्ड, बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं नहीं मैम हमने वर्ड बदल दिया है, ये
ये कर दिया, आगे पीछे कर दिया, वो पैराफ्रेजिंग होगी, मगर उसको भी आपने एक्नॉलेज करना है कि आपका सोर्स ऑफ आइडिया क्या था. You paraphrase too closely to the original, substituting synonyms for some of the original words, even if you do acknowledge the source. You use someone else's idea, argument, interpretation, facts, or supporting evidence without indicating your dependence on it with a footnote or a textual citation, even if you modify or elaborate the idea or argument. तो आप अगर सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक रशियन थेरिस्ट ने दिया है, आई एम गोइंग टू यूज इट इन इंडियन कंटेक्स्ट, सो आई मस्ट एक्नॉलेज कि मुझे कहाँ से आइडिया मिला है. दो मैं अपना ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस करती रहूंगी, बट अपना ओरिजिनल आइडिया कहाँ से आया है वो मुझे जरूर बताना है. You fabricate a source or quotation to give the appearance of having done required research. You turn in someone else's work in whatever form as your own. जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले. तो ये डेंजर, ये 6 जो तरह के डेंजर्स हैं, we must avoid them and we must cite the sources. Now, what is a citation style or a reference style? It dictates the information necessary for a citation and how the information is ordered, punctuations. बहुत बारी हमारे बच्चे या हम लोग खुद punctuations को पर ध्यान नहीं देते हैं. हर रेफरेंसिंग स्टाइल के अपनी तरह के punctuations हैं. पब्लिशिंग ईयर की प्लेसमेंट अपनी तरह से है. कैसे नाम लिखा जाता है विद सरनेम फर्स्ट और फर्स्ट नेम फर्स्ट, वो अलग अलग तरह से दिया जाएगा, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी. एंड अदर फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टाइल. सो साइटेशन हमारी मदद कैसे करता है, what it is required for? It is a way of giving credit to individuals for their creative and intellectual work, so that you utilize to support your research. It can also be used to locate particular sources and combat plagiarism. Can include author's name, date, location of the publishing company, journal title और DOI. आजकल आप देखोगे हर जो इंटरनेट सोर्स है उसके साथ एक DOI होता है, जिसको कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. जिसको आप क्लिक करोगे तो आप पब्लिकेशन पे पहुंच जाते हो डायरेक्टली. सो पहले टाइम था जब हमें इतना ज्यादा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स को ही एक्सेस देते थे मोस्ट ऑफ द जर्नल्स, बट नाउ इफ यू साइट इट करेक्टली, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज publishers और एज रिसर्चर्स और एज टीचर्स कि हम जिस बंदे का भी काम करें उसको साइट कर लें अच्छी तरह से, उसका DOI वगैरह जो भी दिया गया है, किस डेट को आपने रिट्रीव किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देनी चाहिए और आपको उस बंदे को क्रेडिट देना. Suppose I am doing a research which is similar to your research. You have published a paper and you have cited resources. So मेरे लिए आसान हो जाता है कि I also look at those resources and try to understand the topic better. तो ये तरीका जो है बहुत हेल्पफुल हो गया है विद ऑनलाइन कमिंग ऑफ ऑल द जर्नल्स, और हमारी अपनी लाइब्रेरीज बहुत सारे जर्नल्स को एक्सेस देती हैं और ऑनलाइन जर्नल्स को, और हम बहुत सारा डेटा अब तलाश पाते हैं जो पहले हमें, जैसे जब मैं रिसर्च कर रही थी, PhD कर रही थी या डिसर्टेशन भी हम कर रहे थे, तो हमारे को जम्मू में इतना ज्यादा कोई एक्सेस नहीं था जर्नल्स को. वेरी फ्यू जर्नल्स इन द लाइब्रेरी बिकॉज आवर्स वाज अ न्यू डिपार्टमेंट. So we had to depend on our closest neighbors like PAU लुधियाना, या दिल्ली जाना पड़ता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस या लेडी अर्बन कॉलेज. इस तरह से हमें या हिसार में जहां भी होम साइंस है वहां जाना पड़ता था. अब हमें घर बैठे अगर हमारे पास इंटरनेट है या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज में इंटरनेट सर्विसेज से हम कितने भी जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं.
मगर हमें प्लेजरिज्म के ट्रैप में नहीं फंसना है, नहीं तो हमारी पीएचडी रिजेक्ट हो सकती है, हमारे पेपर्स रिजेक्ट हो सकते हैं। अब हम जो साइटेशंस यूजुअली कैसे फॉर्मेट करते हैं, by what information to include, like authors, title, journal, year, issues, and pages. How to order and format this information. How to reference these citations in the main text, for example, by number or author or year, whatever. Citation styles are needed not only to correctly identify all the references, but also to help the researcher while reading the text. जब भी मैंने देखा है हम लोग किसी कॉन्सेप्ट या उसमें उलझते हैं, नहीं समझ आ रहा है, whether someone has previously worked on this, the web is an excellent source of understanding what the people have worked on, what are the gaps in researches, what should we work on, and in clarifying the operational definitions and all. और हमारा काम देख के अगर हमारा काम अच्छा है, हमारे आगे जो रिसर्चर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी को मिलेगी इन देयर रैंकिंग्स, ना सिर्फ हमें मिलेगी इन आवर एपीआई कोर्स, बट जो हमारे बाद रिसर्च करेंगे उनको भी मदद मिलेगी। मगर कल को हमारा पेपर या हमारा थीसिस पढ़ के अगर किसी बच्चे ने सेम कहीं और साइट हुआ देख लिया, मतलब पहले हमसे हमने सपोज 2020 में किया, तो अगर वो 2017 में ऑलरेडी वैसी वो कहीं लैंग्वेज पढ़ेगा तो उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा कि ये हमारे टीचर्स क्या चीटिंग करते हैं। हम बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं डोंट चीट, डोंट कॉपी, डोंट लुक हियर एंड देयर, तो मगर जब वो हमारा ही काम देखेंगे तो वो ऑलरेडी चीटेड और कॉपीड मिलेगा, तो हमारी भी उसकी नजर में इज्जत खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को रेफरेंसिंग स्टाइल में मदद करती हैं, जैसे एट ऑल। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, ये एट ऑल कैसे यूज होना है, et.al, et.al, कॉमा किस तरह से यूज होना है ये। Whenever I'm checking any thesis from outside university or any paper from a journal, जब हम उसको review कर रहे होते हैं, many a times et al is not used properly. So et al is one of the ways of it's a component of referencing. And whenever you cite a work by 3 to 5 authors in text, you should list all of their surnames in the first citation. But this also depends from journal to journal. So in journals where we publish, it is mostly the APA style, American Psychological Association style of referencing that is followed. And that says that whenever you are citing a work by 3 to 5 authors in text, you should list all of their surnames in the first citation. In a subsequent citation, you should include only the first author's surname followed by et al. And others. If you are citing a work by 6 or more authors in text, you should list the first author's surname followed by et al. In all citations. I'll give you some examples. The correct way of using et al. Is when you are citing it for the first time. अब ये दोनों जोन्स ही हैं, बीटी जोन्स, एससी जोन्स, ये दो तरह के दो रेफरेंसेस हैं। सो अगर आप जोन्स एट ऑल करोगे एक ही पहली बारी में ही, तो बंदे को समझ नहीं आएगी कौन सा जोन्स यूज किया आपने। दोनों 2001 में ही स्टडीज हुई हैं, तो आपको फर्स्ट जो साइटेशन है उसमें थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में देना पड़ेगा, बीटी जोन्स बाकी सबके सरनेम्स हैं, और एसई जोन्स और बाकी सबके सरनेम्स हैं। और सब्सिक्वेंट साइटेशंस जो हैं वहां पे आप लिख सकते हो बोथ बीटी जोन्स एट ऑल एंड एसई जोन्स एट ऑल प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट, बिकॉज एक ही तरह की स्टडी की उन लोगों ने, मगर दो बंदे बिल्कुल अलग हैं। तो अगर हम सिर्फ जोन्स एट ऑल लिख देंगे 2001, इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द जोन्स। सो उसके बजाय हम उसका फर्स्ट नेम भी यूज कर सकते हैं, बीटी जोन्स एट ऑल, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ citation style you are using. So नीचे इसका incorrect
फॉर्मेट दिया है, और ऊपर क्योंकि देखिए आप जोन्स और नीचे भी जोन्स है, 2001 में वो स्टडी हुई है, 2001 में ये स्टडी हुई है. बट व्हाट वी हैव टू करेक्टली डू इज फर्स्ट साइटेशन, जब पहली बारी आपका टेक्स्ट में उनका नाम आएगा तो ऐसे देना है, और जब दूसरी बारी आएगा तो ऐसे देना है. ये आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट. अगर ऑथर्स एक या दो हों तो पामर एंड रॉय, शर्मा एंड अरोड़ा 2010, और उसको सब्सिक्वेंट टेक्स्ट में भी दो ऑथर्स हैं इसलिए ऐसे ही लिखते हैं हम. 3, 4, 5 ऑथर्स हैं तो पहली जो साइटेशन होगी वो फुल होगी 5 ऑथर्स की, और अगली जो सब्सिक्वेंट होगी शार्प एट ऑल डॉट कॉमा 2007. इसको बड़े लोग कोलन बना देते हैं, ये कोलन नहीं है, ये है डॉट कॉमा. 6 और मोर तो आपने शुरू से ही फिर उनको एट ऑल की हो ही यूज करना है, डॉट कॉमा करके. इसको याद रखिए, ये गलती बहुत ज्यादा होती है. इसको कोलन की तरह यूज किया जाता है, सेमीकोलन की तरह. ये सेमीकोलन नहीं है, ये डॉट कॉमा है. Another thing that we use in the referencing style is the footnotes. यूजुअली जो हम लोग पेपर्स लिखते हैं एपीएस स्टाइल में, उसमें फुटनोट्स हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं. बट इन अदर स्टाइल्स एमएलए है या देयर आर अदर स्टाइल्स व्हिच विल बी कमिंग टू, फुटनोट्स आर यूज्ड, एंड स्पेशली इन लॉ जर्नल्स footnotes have a very important role to play. So they are sometimes called notes or a note or whatever you can call, and they appear at the bottom of the page. They require two elements: footnote throughout your assignment, bibliography or list of references at the end. Putting a small number above the line of type directly following the source material. This is called a number identifier. This number is called a note identifier. आप superscript यूज कर सकते हो. कोई और फॉर्मेट जैसा जर्नल ने दिया है वो यूज कर सकते हो, बट यूजुअली ये सुपरस्क्रिप्ट ही यूज की जाती है. It is called a note identifier. It sits slightly above the line of the text. Footnoting should be numerical and chronological. The first reference is 1, the second is 2, and so on. Any questions till now? I would like to connect to you because I'm continuously talking. No doubt, ma'am. No doubt. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Is that clear to you? You can read them. Yes, ma'am. So I'll continue. Then अगर हम किसी का कुछ यूज करते हैं तो कॉपीराइट फुटनोट्स होते हैं, वो हमें जरूर यूज करने चाहिए. If you need to include copyright material that exceeds fair use guidelines, you need to obtain permission from the copyright holder. अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे उसके नीचे उसका कॉपीराइट दिया गया होता है. If you cannot reproduce the material without permission, you can use the material for research. इस तरह से काफी सारे और भी फॉर्मेट्स हैं जो दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो. और आपको अगर वो परमिशन देते हैं to use it for research purpose, acknowledge them and use it. If they do not give you permission to use them, then you have to write to the person. जैसे हमारे बच्चे कई स्केल्स यूज करते हैं, रेटिंग स्केल्स यूज करना चाहते हैं, which should not be used without the permission. जो हम खरीदते हैं अपनी लेबोरेटरी यूज के लिए, वो तो हम यूज करने देते हैं, बट कुछ ऑनलाइन सोर्सेस हैं जहां से वो उनको परमिशन लेनी होती है. एंड व्हेन यू गेट द परमिशन you can use those resources. Include that permission in a copyright permission note, footnote. तो आप जब कोई भी ऐसा यूज करते हैं तो आपको एक फुटनोट बना के उसको जरूर एक्नॉलेज करना है. If you have obtained permission to use a table or an infographic, then you should include the credited source in the caption.
So कभी भी कोई भी फिगर या टेबल होता है वो जिधर से लिया जाता है, even if it is in the from the census of India, you must give credit to that. एक छोटी सी लाइन सोर्स की डालनी होती है बिलो द टेबल. आपने देखा ही होगा कि कभी भी कोई टेबल होता है स्टैटिस्टिकल टेबल, तो उसके नीचे सोर्स जरूर लिखा होता है. उसके बाद आपको फुट नोट नहीं यूज करना है. अगर आप टेबल के नीचे ही लिख रहे हैं, उसके बाद फुट नोट नहीं यूज करना. ये दो तरीके हैं, एक जर्नल और एक बुक का कॉपीराइट साइट करने का. Title of the article by author and the author, year, title of the journal, volume, page number, copyright year by name of the copyright holder, reprinted or adapted with permission. ये पूरा फॉर्मेट है. इसी तरह बुक का फॉर्मेट है. कैसे यूज करना है आपने, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट देके नीचे आपने फुटनोट में ये सब डालना. और आप ये जो है जब आप ऐसा कर लेते हैं, देन यू आर फ्री टू यूज दैट कॉपीराइटेड मटेरियल with the permission of the person. Otherwise, he can hold you for copying the work or using the scale without not acknowledging, without taking permission. ये एक legal आपके ऊपर burden बन सकता है. So don't make that burden, don't take that burden. Just get a copyright from that person or a permission from that person. Not copyright, I'm sorry, permission. Now, how to number the footnotes? पहले भी मैंने थोड़ा सा इसको टच किया. So आपको एक superscript डालनी है above the footnote, following any punctuation except a dash. The footnote number precedes a dash, like so. Dash मतलब जो भी लिखना है यहाँ पे कोई जैसे zone of proximal development 2 करके dash इस तरह से. Place the footnote number if it applies only to the material within the parenthesis. अगर ब्रैकेट में कोई चीज है जिसको आपने एक फुटनोट के साथ और क्लियर करना है, तो फिर आप उसको ब्रैकेट के अंदर ही डालो और उसको फिर नीचे जाके फुटनोट दे सकते हैं इसको. तो 1 would mean whatever you are using in this, 2 would mean whatever you are using in this, and 3 would mean within the bracket जो आपने वर्ड यूज किया है, कोई लॉ का कोटेशन यूज किया है, कुछ किया है, उसको आपने जस्ट यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट देके नीचे आप उसको जस्टिफाई करोगे या फुटनोट दोगे उसका. कुछ और चीजें भी हम रेफरेंसिंग में यूज करते हैं, जैसे आई बिड. इट मीन्स सेम एज द लास्ट एंट्री. Use IBID when 2 references in a row are from the same source. Use offset, which means as previously cited. इसमें आप देखोगे op के बाद भी एक dot है और sit के बाद भी एक dot है. Offset is used when you have already given full details of that source in an earlier note. So footnote, endnotes and parenthetical citations. Footnotes के बारे में मैंने आपको बताया. endnotes भी endnote होते हैं जो चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं या जो रेफरेंसेस सेक्शन के साथ दिए जाते हैं. और parenthetical I have a small question. Yeah, Can I ask? Just a moment. Just a moment. Let me come to the screen. जी, Preeti. Yeah, ma'am, this is a question about numbering. Yeah, ma'am. So this is a question about numbering the end notes. I mean, suppose the in-text references that we are putting in, what is the latest trend? Do we need to superscript them with the number that they'll fall in the end note? And the second question is, I mean, the end note should be in order of the in-text referencing, or should they be in an alphabetic order? Order of citation. It's in the order of citation. I'll just be coming to that. I'll just answer that. Any more? Someone had Preeti had raised the hand. Preeti, Mandir. Ma'am, that was by mistake. That was by mistake. Achha. Actually. Okay. Sorry. So any more questions? I'll be just answering.
So now in APA style we use parenthetical citations or reference lists. Whoever publishes in that style knows that हम लोग brackets use करते हैं. I'll be explaining all these in detail. Let me just come to the next thing. So in MLA format, we can have footnotes and or endnotes, but more commonly use parenthetical citations and work cited. In Chicago format, almost always it has a footnote or an endnote. This is how a footnote is cited, as you must all be aware. The information in the text body is marked with a superscript number, and the corresponding source citation and note is at the end of the page, the bottom. तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको उसी टाइम उसी पेज पे एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन यूज a superscript and use the same number here, and this should be in the order of the number 1 2 3 4. Again, you must be seeing that I have cited the source from where I have taken, and this is why क्यों किया मैंने ऐसा, because अगर मैं ये सारा डेवलप करती, it would have taken me 2-3 months to complete this whole presentation. So I also have to take help from other people who have done work in this area, and the best thing to do is give them their citations. आपके क्वेश्चन का जवाब, endnotes are located at the end of a complete document or sometimes at the end of a chapter or a section. So this is how you endnote is done. It is done at the end of the chapter. ये सारा जो है आप देखोगे कि जहाँ पे खासकर लिटरेचर के जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर लॉ के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ये सब बहुत डिटेल्स में दिया, जैसे कोई केस की साइटेशन वो बीच में करते हैं इन टेक्स्ट, वो नीचे आइदर फुटनोट में या एंड नोट में वो उसको कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन भी करते हैं काफी डिटेल में. तो और अगर आपको जैसे कॉपीराइटेड कोई परमिशन का बताना है, यू कैन आइदर गिव इट इन अ एंड नोट और इन अ फुटनोट. तो जैसे आपके आएंगे टेक्स्ट में वैसे ही आपको नंबरिंग देना है. दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट APA style. And the parenthetical citations are like this, as we use in the APA and MLA format. They are placed at the end of the sentence that contains the cited material. Even if आपको अब बिल्कुल किसी की कॉपी नहीं करनी है, you can understand the whole thing and write it in your own words, but again, you have to give citation to that idea also. Each parenthetical citation made in a document should correspond to an entry in a work cited page or reference list at the end of the document. It should not be treated as a substitute for quotation marks when an author's word are being presented exactly. Should also be included even when paraphrasing someone else's word. तो मैं आपको कह रही हूँ जैसे 10 बंदों ने एक आइडिया पे काम किया है, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो जिसको आपने सब सेक्शंस में अपना डिवाइड किया है, तो 10 बंदों ने उस चीज पे काम किया है, तो बजाय 10 सेंटेंस लिखने के आप उसका क्रक्स निकाल के एक लाइन में लिख सकते हो और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आप साइट कर सकते हो किस किस ऑथर के काम को आपने रेफर किया है फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. So it's not necessary that you write repeat the lines. इसने भी ऐसा कहा, उसने भी, शर्मा एट ऑल ने भी ये किया, अरोड़ा एट ऑल ने भी ये किया, मनहास एट ऑल ने भी ये किया. उसके बजाय आप उसको पढ़ो, समझो, क्रक्स निकालो, एक लाइन में लिखो जो कॉपीड नहीं होनी चाहिए, एंड देन cite all their works in all their names in parentheses. अब हमारे पास रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं.
I have also been reluctant to use them because अभी सीखना था, but आपको साथ शेयर करने के लिए I just used one. मैंने मेंटली बहुत देर से डाउनलोड करके रखा है, मगर मैं उसको यूज नहीं कर रही थी. So ये अभी नए भी नहीं है. They have been used since last 25 years, but हम अभी इतना यूज नहीं कर रहे हैं इनको. मैं फ्रैंकली बताऊं तो अभी हमारे को थोड़ा सा और फ्रेंडली होना है, यूजर फ्रेंडली इसके लिए, मतलब हमें फ्रेंडली होना है. So it helps you to create and manage a reference list. And most of the newer reference managers focus on collaborative aspects of collecting references and writing manuscripts. It's an organized set of system that allows the end user to insert, download, and rearrange desired reference sources in one place with full text document wherever available. तो हमारे जमाने हम कैसे रेफरेंसेस को इकट्ठे करते थे. अब मैं भी इतने पुराने जमाने की नहीं हूँ, मगर हमारा भी इससे पुराना हो चुका है जमाना. तो 2000 में की थी मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट. तब कंप्यूटर आ गए थे, इंटरनेट सब था मेरे पास, मगर ये तरीका मुझे नहीं आता था करने का. तो पढ़ती थी, प्रिंट आउट लेती थी, उसके बाद वो रेफरेंस कार्ड्स होते थे, शायद आपको भी कभी देखा हो आपने या नहीं देखा है. रेफरेंस कार्ड्स पे पूरा रेफरेंस लिखते थे, और जो उसमें से कोट करना है लाइंस को वो लिखते थे, और फिर मैं उसको एक धागे में पिरोती जाती थी अल्फाबेटिकली. और जब एक नया रेफरेंस लिखती थी, वो धागा वहां से खोल के उतने कार्ड्स निकालती थी, वहां पे डाल देती थी, और फिर मैं जो टाइप कर रहे थे मेरा थीसिस उनको देती थी, तो वो रेफरेंस इंसर्ट कर देते थे वहां पे. तो मेरा ये तरीका था ऑर्गेनाइज करने का अपने रेफरेंसेस को. बट दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग विदाउट हैविंग टू राइट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. और उसपे मैं एक छोटा सा वो नोट भी डाल देती थी कि मुझे ये कहाँ कहाँ यूज करना है ये वाला रेफरेंस. तो अब आपके पास रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिनको आप यूज कर सकते हो. इनके फीचर्स क्या है? You can retrieval of reference information from online bibliographic databases, DOIs, and other persistent identifiers for bibliographic information. Automated management of PDF files, open access for easier access to full content, web-based reference management for easy collaboration and use across multiple devices. तो मैं आपको just एक व्यू देती हूँ एक सॉफ्टवेयर का. मेरी एक स्टूडेंट है, वो काम कर रही है कोविड टाइम पेरेंटिंग के ऊपर. सो मैंने ये मेंडले करके एक सॉफ्टवेयर है, आगे मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे डाउनलोड करना है. ये यूज कर रहा ये आप देखिए मेरे रेफरेंसेस, मैंने ये 2021 से डाउनलोड करके रखा है, मगर इतना ज्यादा यूज नहीं किया है. और इनके साथ फाइल्स भी अवेलेबल है डाउनलोड. आप ऐड अ न्यू करो, आप मैन्युअली कर सकते हो इसको डाउनलोड, कंप्यूटर से कर सकते हो. लाइक इफ आई वांट आई कैन, ये मैंने कर लिया, इसको यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया. सो ये आप यहाँ पे फाइल भी आ गई विद द PDF फाइल. इफ आई क्लिक ऑन दिस and I want to organize it, I can mark as favorite, और यहाँ से मैं इसको पूरा आर्टिकल जो है इसका पढ़ सकती हूँ. So whatever I read, I may not what you say, हाथ से नहीं लिखना है मुझे सारा का सारा, या प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं, फालतू का पेपर जाया करने की जरूरत नहीं. I just have to save it here and read it whenever I want. And look at this. This is the DOI, Digital Object Identifier. और आप ये आपको अगर आप इसको भी क्लिक करोगे तो आपको पहुंचा देगा इंफॉर्मेशन तक. And here is the whole article for you to read and reference. और ये मेंटले में आप करते जाओ इसको ऐड, और इस तरह से आप इसका ये जैसे ये दूसरा आर्टिकल है, एक
maternal self-efficacy buffers the effect of COVID-19 related experiences. So मैंने ये भी इधर डाल दिया। जब मैं कल उससे बात करूंगी अपने स्कॉलर से, तो मैं उसको बोलूंगी कि इस तरह से आप भी कर लो, और आप अब इसका मेटा डेटा भी आप देख सकते हो, क्या है इसका DOI, क्या है, कहाँ से आया है, ये कहाँ पे, so whole information, and you can read on and use all kinds of uh, ऑपरेशंस ऑन दैट। और इस तरह से आप पढ़ते जा रहे हो, आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, और आपने डाल दिया अच्छा ये भी स्टडी अच्छी है, आई एड इट टू द लाइब्रेरी। सो व्हेन आई एड इट टू द लाइब्रेरी इट विल अपीयर इन माय लाइब्रेरी, और उसको जब मैं क्लिक करूंगी उसका पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी मुझे। इफ आई वांट टू सी मोर आई कैन सी फ्यूअर, आई कैन। तो मेंडले एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारे फीचर्स हैं और भी हैं। नाउ व्हाट इज दिस DOI एंड व्हाट डज इट डू? DOIs for journal articles are issued by Crossref, a non-profit organization that has most scholarly publishers as its members. DOIs can also be used, DOIs can also be used for other content like conference proceedings or book chapters. There are also unique identifiers for scholarly content. For example, PubMed ID, PubMed Central ID, ARXIV ID. So अब बहुत तरह के IDs आ गए हैं, DOIs आ गए हैं, जो identifiers हैं for certain articles which are placed in certain abstracting or indexing services. Reference managers can extract the DOI from imported PDFs, obtain more citation information using the DOI, store the DOI internally to help find duplicate records, etc. So अभी मैंने आपको मेंडले का खोल के दिखाया कि आप DOI से भी फुल आर्टिकल तक जा सकते हो अगर पूरा आर्टिकल आपका सेव नहीं है रेफरेंस में। तो इस तरह से DOI दिए गए होते हैं, and if you click at them you can reach the article. So it is taking some time to open up. अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आपको मिल जाता है इस तरह से। तो ये जो DOIs हैं हमारे, ये हमें ये फुल DOI है, ये शॉर्ट DOI। और जो रेफरेंसिंग में हमारी और टर्मिनोलॉजीज हैं या और तरह के जो आपको मिलेंगे एक जर्नल के साथ, वो होंगे जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डेटा फॉर्मेट्स लाइक BibTeX. It is now widely supported by reference managers that work with Microsoft Word and other authoring tools, and by online bibliographic databases such as Google Scholar. RIS, Research Information System. It is a standardized tag format originally invented by RIS, now a part of Thomson Reuters. EndNote XML and CitProc JSON are newer formats which are not yet as widely supported. मगर BibTeX और RIS आप देखोगे आपके जर्नल्स के एंड में अगेन दिस इज अ DOI, और देखो जहां जहां वो स्टोर्ड है वो वहां का आपको नंबर दिया गया है इसके ऊपर, कहाँ पे कहाँ स्टोर्ड है ये डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत आसानी से हो जाती हैं इंसर्शंस ऑफ साइटेशंस। व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो इफ यू वांट टू यू कैन, और ये आपको आराम से मिल जाएगा इन द माइक्रोसॉफ्ट program. Put your cursor at the end of the text you want to cite. Go to reference, style, and choose a citation style. Select insert citation. तो इस तरह से वो एक न्यू सोर्स है या उसको choose add new source and fill out the information about your source. तो add new source and fill out the information about your source. Once you have added a source to your list, you can cite it again.
Put the cursor at the end of the text you want to cite. Go to references, insert citation and choose the sources you are citing. So उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे I'm sorry क्लिक करना है तो वो आप से उसको वो साइट कर देगा खुद ब खुद. To add details like page numbers if you are citing a book, select citation options and उसमें edit sorry मैं इसको क्लिक करना शुरू हो जाती हूँ. उसमें आपको एडिट ऑप्शन एडिट साइटेशन को करना है and you can create a bibliography. Put your cursor where you want the bibliography. Go to references to bibliography and choose a format. वहां पे आपको APA यूज चाहिए या क्या, ये जैसे देखो आप यहाँ पे जाओगे, इधर आप क्लिक करोगे फॉर साइट, यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स. आपका जो जर्नल है आप उसके हिसाब से अपना रेफरेंसिंग स्टाइल चूज करके उसको ऐड कर सकते हो. ये देखिए. So like I was looking at a health behavior article among and problems among young people. So ये एक article आया, I want my scholar to read it. So मैं उसको सेव कर लूंगी और अगर उसको साइट करना है तो इस तरह से वो क्योंकि APA स्टाइल हम यूज करते हैं तो हम ये वाला कॉपी कर लेंगे और ये इंसर्ट कर देंगे अपने साइटेशंस में. इधर देखिए आप, ये एक आर्टिकल खोला मैंने इस जर्नल में, टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज आई वांट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन डायबिटीज इन यंगर चिल्ड्रन. सो खुद भी पढ़ना है उसको बताने से पहले. तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, साइटेशन टूल्स भी दिए हैं, ठीक है, और आर्टिकल मैट्रिक्स भी दिए हैं. तो जिसकी मदद से आपको जब आप ये खोलते हो citation tools, तो these are all kinds of citation tools. I'll be showing you many of them to you. BibTeX, Bookends, EasyBib, EndNote, Mendeley, Zotero, RIS, Ref Manager. ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप citation डाउनलोड कर सकते हैं. आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगा और वो खुद भी ये लोग बताते हैं कि किस तरह से आप हमारा आर्टिकल डाउनलोड कीजिए. अब इसमें बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है आर्टिकल को. तो जब आप साइट करेंगे आपने 6 के नाम नहीं लिखने, आप एट ऑल भी यूज कर सकते हो, 2-3 के नाम लिख के. तो ये तरीका बताया उन्होंने, बट हमें अपने जर्नल को या अपने स्टाइल को देखना है, हमें कौन सा यूज करना है. तो इस तरह का डेटा जनरेट होता है बिबटेक्स में. ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये वॉल्यूम, पेज नंबर, DOI, ईयर, आप इस तरह का डेटा जो है वो सेव कर सकते हो अपने रेफरेंस मैनेजर्स में. अलग अलग तरह के रेफरेंसिंग स्टाइल्स जिनकी मैं बात करूंगी वो 4 ये मैंने पिकअप किए हैं क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंसिंग स्टाइल्स. द APA or American Psychological Association, it is used by education, sociology, sometimes sciences, sometimes social sciences also. MLA is Modern Language Association style, it is mostly used by humanities. Chicago or Turabian style is used generally by business, history, and fine arts. And IEE style is used by the engineering or technical people. The APA style, 7th edition, it came out in 2020. It's a publication manual of American Psychological Association. अब इसमें जब हम मटेरियल साइट करते हैं, इनसाइड टेक्स्ट साइटेशन जो है पैरेंथेसिस में होती है, पैरेंथेटिकल साइटेशन इसको कहते हैं. अ बुक इज साइटेड लाइक दिस, Sapolsky, comma, R.M. then year in again brackets. The title of the book is in italics, and the publisher's name is here, Penguin Books. So if it is a chapter in edited book,
यहाँ जो इनसाइड टेक्स्ट साइटेशन आएगी वो उस बंदे की आएगी जो जिसका चैप्टर आप साइट कर रहे हो, ना कि उस बुक की आएगी जिसको आप साइट कर रहे हो, जिसकी बुक का आर्टिकल साइट कर रहे हो। तो डिलार्ड कॉमा जे डॉट पी डॉट अगेन ब्रैकेट अगेन डॉट, ये डॉट भूल जाते हैं बच्चे इसलिए बोल रही हूँ कि अब मेरे को काफी साल हो गए पढ़ाते, तो मेरे लिए आप बच्चे ही हो। करंट्स इन द स्टडी ऑफ परसुएशन, कौन सी बुक में से लिया है? इन एम डॉट बी डॉट, ये डॉट इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन। ऑलिवर कॉमा, अगर कोई जर्नल है, अगर आप ये नहीं ठीक से डालते हो रेफरेंसेस तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका आर्टिकल। ए डॉट राने, आप देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है सर नेम से, बट यहाँ फर्स्ट नेम से और मिडिल नेम से दिया जा रहा है। एडिटर्स डॉट ब्रैकेट कॉमा मीडिया इफेक्ट्स कोलन एडवांसेस इन थियरी एंड रिसर्च। एडिशन कौन सी है? इट्स फोर्थ एडिशन। पेजिनेशन क्या है? 115 to 129 एंड पब्लिशर कौन है? रूल है। देन इफ इट इज इन अ प्रिंट जर्नल, यहाँ पे इनसाइड टेक्स्ट जो साइटेशंस हैं वो हमेशा पैरेंथेसिस में रहेंगी। वेनस्टेन जे 2009, द मार्केट इन प्लेटोज रिपब्लिक, कहाँ पब्लिश्ड है? इट्स पब्लिश्ड इन क्लासिकल फिलोसफी। और वॉल्यूम है 104, नंबर है 4 और ये पेजिनेशन है। पेज नंबर देना इंपॉर्टेंट है अगर आप ये समझाना चाहते हो दैट यू आर सीरियस अबाउट मतलब दीज थिंग्स। कई बार पुअर जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसमें कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, कोई कॉमा फुल स्टॉप गलत जगह लगा है, इटैलिक्स गड़बड़ है, बुक का नाम इटैलिक्स में होता है और जर्नल का टाइटल इटैलिक्स में होता है। ठीक है, बुक का नाम और जर्नल का टाइटल। जर्नल का जो नाम है वो विद इन कोट्स दिया जाता है, विद इन इन्वर्टेड कॉमास दिया जाता है। एन आर्टिकल इन एन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ग्रेडी एट ऑल डॉट कॉमा, इट्स नॉट सेमीकोलन, इट्स डॉट कॉमा, और उनके नाम दिए गए हैं उसी तरह से। और ये 5 या 6 ऑथर्स हैं और उसके बाद आपको उसके बारे में डिटेल दी है। बाकी डिटेल वही रहती है, वैसी ही रहती है। यहाँ पे आप DOI ऐड करते हैं। ठीक है, उसी तरह वेबसाइट को देना है तो आप वेबसाइट को पूरा देना पड़ेगा, मगर अगर आप टेक्स्ट में ऐसे वेबसाइट दोगे, कई बार ये गलती करते हैं कि ये बोलोना की जगह यहाँ पूरा वो दे देते हैं, ये तो प्लेजरिज्म में ऐड हो जाता है, क्योंकि प्लेजरिज्म में रेफरेंसेस चेक नहीं होते, बट ये जो इनसाइड टेक्स्ट साइटेशंस है ये तो इंक्लूड करनी होती है। मगर ये जो HTTP वाला हफिंगटन पोस्ट जो है, ये सारा जो है ये अगर डाल देते हैं ना हम टेक्स्ट में तो वो प्लेजरिज्म में ऐड हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट पुट एनी वेबसाइट और वेब लिंक इन, जैसे DOI वगैरह, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आनी है, क्या कहते हैं, ऑथर का नाम आना। सॉरी, मुझे ड्रिंक पानी के लिए 2 मिनट रुकना है। Now this is how you do citations in the APA style. इन टेक्स्ट जो है, अगर ये इतनी लंबी साइटेशन है, आप इतना नहीं देंगे, ना ही DOI यूज करेंगे, सिर्फ वुल्फ साइमन एट ऑल 2011 आएगा। उसी तरह अगर ये आर्टिकल है कोई शर्मा, ये पूरा आर्टिकल का रिट्रीवल डेट, उसकी वेबसाइट दोगे तो प्लेजरिज्म में ऐड होगा। आपको सिर्फ लिखना है शर्मा 2010 और बाकी रूल्स मैंने आपको पहले बताए हैं। द रूल्स हैव टू बी फॉलोड। इट इज वेरी मैथमेटिकल इन कैरेक्टरिस्टिक। Then we come to the MLA 9th edition. It's the latest edition, 2011, and it's available online. I'll just show you the
video. Are you able to hear it? Are you able to hear it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I think there's no voice. Exactly. Can We you are get able it? to see it, ma'am. Not hear it. This is not Pardon? audible, ma'am. Voice is Ma'am, not we are audible. able to see this, but there's no voice. Okay, okay. I'll just check it out. इसमें आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एक मिनट. Just a moment. Be with me. Bear with me. मैम प्रेजेंटिंग स्क्रीन को अनम्यूट कर दीजिए. एक मिनट. Just a moment. मैं आपको इसमें दिखाती हूँ because it's important we understand. अब आ रही है? No, ma'am. मैम आपकी प्रेजेंटिंग जो स्क्रीन है वो अनम्यूट है. म्यूट कर दें. अच्छा ठीक है. एक यहाँ तो सब ठीक है. एनीवे आप मैम जो नीचे इसी स्क्रीन पे जो नीचे म्यूट है ना उसे अनम्यूट कर दीजिए. अनम्यूट है. यस मैम. अनम्यूट है. आई थिंक मैं वो ईयरबड्स यूज कर रही हूँ ना, उसकी वजह से हो रहा होगा. एक मिनट. अब देखिए. अब आ रही है? No, ma'am. नहीं, कोई बात नहीं. लेट्स स्किप इट. सो you are able to view this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is how you अगर ये नहीं भी चलता, doesn't matter. This is how you code the text in MLA style. So author's name in the text would appear like Magnet develops this argument, the page. This argument has been developed as elsewhere. Then
you can use like this. Two authors' name in reference, like this. Quotation found in indirect or second-hand source, quoted in Magni 66, पेज नंबर 66. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो या आप एपीए में भी कर सकते हो. कई बार हमें डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलता है, तो अब जैसे कुछ पब्लिकेशंस हैं वो आउट ऑफ प्रिंट चली गई हैं, तो किसी और ने कुछ कोट किया है, वी कैन यूज, बट देन वी हैव टू अगेन से वो किसका कोट है. एलेन स्टेट्स दैट दिस एंड कोटेड इन दिस, तो दोनों चीजें देनी है, सेकंड हैंड सोर्स भी देना है उसका. इफ इट इज अ बुक इन प्रिंट देन कार्ड कॉमा क्लॉडिया डॉट. अब देखो यहाँ ईयर इधर आ रहा है, एपीए में ईयर इधर बीच में आता है. द एट्रोसिटी पैराडाइम, अ थियरी ऑफ ईविल, ऑक्सफोर्ड यूपी. ई बुक है तो उसका आपने डीओआई देना है साथ में, बाकी रेफरेंस वैसा ही रहता है, स्प्रिंगर लिंक एंड डीओआई. इफ इट्स इन अ प्रिंट जर्नल देन अगेन सेम, उसको वॉल्यूम ऐसे लिखना है और नंबर ऐसे लिखना है और ईयर यहाँ पे आएगा. जबकि एपीए में वॉल्यूम 2 ब्रैकेट में नंबर 1, फिर ईयर हमारा इधर आता है. So there are minute differences, but these differences matter when you go in for publishing. An article in an electronic journal is cited with a DOI. कई बार अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिले, you have to write retrieved from, retrieved on. ये आर्टिकल्स जो है अपडेट होते रहते हैं, लोग अपने जैसे कोई ओपिनियंस है उनको अपडेट करते रहते हैं, तो आपको उसके करंट ओपिनियन जहां पे भी उसने अपडेट किया है, जिस डेट को किया है, सपोज आज मैं कुछ ऐसा डाउनलोड करती हूँ किसी न्यूज़पेपर से, तो मुझे उसका डेट देना भी जरूरी है. रिट्रीव्ड ऑन, रिट्रीव्ड फ्रॉम, वो देना जरूरी है. एनसाइक्लोपीडिया एंट्री जैसे है वो आपको इसको विद इन कोट्स देके, कोट्स भी देख लो कहाँ है आर्टिकल्स के अराउंड जो है, जो वहां हमेशा कोट्स में दिया गया है. अब कई लोग फुल स्टॉप कोट के बाहर डाल देते हैं, फुल स्टॉप कोट के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा. और यहाँ पे अगेन बाकी सारा रेफरेंस सॉरी वैसा ही है. देन साइटेड बाय हुम एंड एडिशन क्या है, पब्लिशर कौन है, डेट क्या, सॉरी ईयर क्या है और पेज नंबर कौन सा है. अगर एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन को आप कर रहे हैं तो इस तरह से करना है आपको. कहाँ की है वो पब्लिकेशन, जैसे इंडिया की हो तो इंडिया, वट एवर यू आर कोटिंग उसको इटैलिक्स में देना है, कौन सा प्रेस है, कौन सा ईयर है. इसी तरह कोई इंटरव्यू भी आप कंडक्ट करते हैं उसको भी आप दे सकते हैं इन द, बिकॉज ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, ये सब और चीजों पे भी बेस्ड है, सिर्फ रिसर्च पे नहीं है, एम्पेरिकल रिसर्च पे. तो उस पर्सनल इंटरव्यू लिख सकते हैं आप और किस डेट को कंडक्ट हुआ. और फिल्म है, डीवीडी है, इसको भी कर सकते हैं. यू कैन सी द फुल ब्लॉग फॉर दैट. अ पेज ऑन वेबसाइट विदाउट एनी ऑथर, तो आपने उसको विद इन कोट्स बता दिया, कब कहाँ कौन सी वेबसाइट पे आपने देखा है, तो आप किसी ने फोटो डाली है उसको आप उसको क्रेडिट दे सकते हो कि भाई मैंने यहाँ से ये फोटो लिया. अ पेज ऑन वेबसाइट विद एन ऑथर, आप उसकी वेबसाइट पे बताओ कौन से कहाँ से लिया आपने. आर्ट वर्क फ्रॉम अ वेबसाइट, तो उसको भी आप दे सकते हो. नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, और उसका फुल लिंक दे सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि जहां से आप लेते हो कुछ, इवन फोटो भी, उसको भी क्रेडिट देना है. तो then there's another style that is known as Chicago style. We can take a break if you want. Hello? Yes, ma'am. Here we can take a break of 15 minutes and then we will join back. Okay, so we will join back at 40 minutes to 1 or 11:40. 11:40, sorry. Yeah, 11:40. Okay, okay. Thank you so much.
Thank you, ma'am.
कोई अभी जुड़ा है मेरे साथ? I want to check the video again. जी मैम, आई एम देयर। हाँ जी शिफाली, आप देखिए क्योंकि मैं चाहती थी ये। जी आप When you use or present information and ideas from other sources or analyze sources using direct quotes, citations give credit to the ideas of others and make you a credible author. Citations can also indicate genre, provides मैं वही डिटेक्ट करना चाहती हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही? Citation styles are guidelines. Voice is coming this time. ये मैम आवाज आ रही है। गार्डन में अगर कोई थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आएगी ना, क्योंकि अब मैं ईयरबड्स नहीं यूज करूंगी थोड़ी देर। जी मैम। अगर बीच में कोई आवाज आए तो पार्डन मी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम मैम। चुप करके वैसे हो गया। So shall we start, ma'am? आप जैसे कहिए। हाँ, I can start. जी बिल्कुल। So let us resume our session after the lunch break and welcome Madam Professor Neeru Sharma ji and other participants. जी, over to you, ma'am. Just a moment. From the current slide के बजाय शुरू से शुरू हो गया। Here. When you use or present information and ideas from other sources or analyze sources using direct quotes, citations give credit to the देख ideas लीजिए, of कोई others बात and make you नहीं, a मैं आपको फिर बता दूंगी। Citations can also indicate to your readers that you're writing in an academic genre that provides information to help them find the same sources again. Citation styles are guidelines and conventions that different disciplines follow, present writing and sources in a consistent way. Mla Style from the Modern Language Association of America is a common citation style used primarily in arts, humanities, cultural studies, English, and literature. There are two main components of a citation. First, when you directly quote or reference another source, include an in-text citation in the body of your paper. In Mla Style, this citation typically includes the author's last name and the page number of a direct quote in parentheses. If there are two authors, use the word "and" between the author's last names. If there are more than three authors, use the abbreviation "et.al., which means "and others." If you've already clearly introduced the source earlier in your paper, you can just include the page numbers in parentheses at the end of the direct quote. Then, include a complete citation on your works cited page at the end of your paper. Your in-text citations and works cited should match. The core elements for works cited include the author, the title of the work, versions or editions of the source, the publisher, the publication date, and the location, which can include page numbers and links. For a works cited page, use a hanging indent and organize your references alphabetically by an author's last name. This helps your readers skim through the list to find a source using the in-text citation. Works cited citations will vary based on the type of source you're citing and the information available. Use the official handbook or an online citation guide to check which details about the source you should include. Let's look at one example. In college, you'll probably be citing some academic journal articles. First, include the last name, comma, first name of the author. If the author uses their middle name or initials, include that too. If there are two authors, use and write out the first name, middle initial if listed,
and last name of the second authors in that order. If there are more than 3 authors, you can just list the first author and use et al. As you would with an in-text citation. Then, include the title of the article using quotation marks and headline-style capitalization. This means that most words in the title are capitalized except for less important words like a, and the. Next, include the name of the academic journal where the article was published in italics. Academic journals publish collections of articles throughout the year. A journal might have a volume for each year, publish a new issue every few months. Use the abbreviation VOL period and the volume number. If there's an issue number, add a comma and use the abbreviation NO period and the issue number. Then include a comma and the year the article was published, and another comma and the page range using the abbreviation PP period. Formatting citations and your paper can require some attention to detail. If you're not sure how to cite a source using Mla style, ask a librarian. So this was about how to cite a citation in Mla style. Or many universities have developed their own style and guide of writing. तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसा आपकी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है वैसे भी यूज कर सकते हो. कई बारी कोई जर्नल्स होते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के, वहां पे जब हम पब्लिश करते हैं तो उनके अपने स्टाइल्स को ही रेफर करना पड़ता है. तो ये डिपेंड करता है विच जर्नल यू आर पब्लिशिंग, विच सब्जेक्ट यू बिलोंग टू. So Chicago style is another way of writing the references. It is a documentation style that has been published by the Chicago University Press since 1906. This incorporates rules of grammar and punctuation common in American English. Most of us follow the British English till now because we have been ruled by the British for a long period. So हमारी जो English रहती है, it is mostly the British English. American English थोड़ा सा फर्क है उसमें. Typically, it presents two basic documentational styles: notes and bibliography, author date. Choosing between the two often depends on subject matter and nature of the sources cited, as each system is favored by a different group of scholars. Now, this is how they do the citations. If it is a book in print, note style में Michael Pollan. अभी तक हम Pollan Michael करके कर रहे थे, surname first करके हो रहा था. Now there's a number. The name is written with the first name first and surname afterwards. And the Omnivore's Dilemma, name of the book in italics. New York, place of publication. Penguin, name of the publisher, comma, 2006, date of publication, and the page numbers. Duplicate note, अगर same दोबारा से repeat करना हो तो इस तरह से देना है. If we are following Chicago style, then bibliography में इस तरह से आएगा. Again, Pollan, Michael, Omnivore's Dilemma, A Natural History of Four Meals. So आप देखो तीनों styles में काफी फर्क है. How the name is written, how the किस चीज को हम हाईलाइट करते हैं वो तकरीबन एक जैसा ही है. इसको यहाँ भी बुक को इटैलिक्स में किया है, वहां भी बुक की इटैलिक्स में होती है एपीए में, मगर यहाँ पे पब्लिशर के साथ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी आ रही है. एंड ईयर कम्स एट द एंड. An article in a print journal, अगर नोट स्टाइल में देना है तो वही जैसे हम सुपरस्क्रिप्ट या पोस्टस्क्रिप्ट बना के superscript बना के दे रहे हैं. 1 Joshua, so again the name in the correct order, like first name, middle name, last name. Then within quotes the name of the article. The journal is in italics. There are no comma, full stop or any colon or semicolon. 104, volume number 2009. And page number 440. So exact जिस पेज पे है उसका वो रेफर किया गया है. उसका डुप्लीकेट नोट अगर आगे कहीं देना है आर्टिकल में तो इस तरह से देना है.
एंड बिब्लियोग्राफी में इस तरह से आएगा. अगेन there's a difference in all the styles. यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. एपीए में ईयर यहाँ पे आता है और यहाँ पे एंड में है, एंड द पेज रेंज इज गिवन here. If it is an article in an electronic journal, then again DOI और access करने की date important है, because it might change with the change in मतलब sometimes people upgrade their articles, तो उस हिसाब से वो बदलाव आ सकता है. So access, the date we access the article is important and the DOI is important. It is also done in the bibliography. Footnotes में भी यही है और bibliography में भी इस तरह से है. Website में भी again उसका website पूरी देनी है, यहाँ पे भी bibliography में इस तरह से reference देना है इसका. और author date style जो है, ये हमारी जो style था वो पूरा रेफरेंस देने का स्टाइल था. ये ऑथर डेट स्टाइल ऐसे है, जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन करेंगे तो पोलन, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है जैसे उसमें होता है हमारे एपीए स्टाइल में. 2006 एंड पेज रेंज ये इन टेक्स्ट साइटेशन में देते हैं. मगर हमारे जो एपीए स्टाइल है उसमें सिर्फ हम इन टेक्स्ट जो है सिर्फ सरनेम, कॉमा, ईयर और नो पेजिनेशन इज गिवन. बाकी बिब्लियोग्राफिक नोट वैसा ही रहेगा, मगर टेक्स्ट में ऐसे आएगा. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट्स, नो कॉमा अगेन, 2009 एंड विच पेज दे हैव साइटेड. पेज रेंज 405 to 50 है, मगर ये जो इन्होंने साइट किया वो कहाँ पे है? 411 में. अगर गूगल है तो गूगल 2009, बट हम वहाँ पे गूगल नहीं लिखते, हम ऑथर का नाम प्रेफर करते हैं एपीए में. इसी से मिलता जुलता एक ट्यूरेबियन स्टाइल है जो केट एल ट्यूरेबियंस मैनुअल फॉर राइटर्स एंड ऑफ रिसर्च पेपर्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, उसका 9th एडिशन में दिया गया है. इसमें जो दो स्टाइल्स फॉलो करते हैं, नोट बिब्लियोग्राफी स्टाइल और सिंपली बिब्लियोग्राफी स्टाइल, एंड ऑथर डेट स्टाइल, previously called parenthetical citations or reference lists. These styles are essentially the same as those presented in Chicago Manual of Style with slight modification for needs of student writing. तो यहाँ पे क्या फर्क है अगर आप देखें, नोट में इस तरह से लिखना है, बिब्लियोग्राफिक एंट्री इस तरह से होगी. बुक्स इन प्रिंट ऑलमोस्ट सिमिलर. आर्टिकल इन जर्नल, ये जो साइटेशंस हैं ये इसके हिसाब से दिया गया है 1133(8), और यहाँ पे जब आप एंड टेक्स्ट में करोगे बिब्लियोग्राफिक एंट्री करेंगे तो इस तरह से की जाएगी. एंड दिस इज यूज्ड वाइडली इन लिटरेचर, हिस्ट्री एंड द आर्ट्स. इट प्रेजेंट्स बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन फुटनोट्स और एंडनोट्स एंड यूजुअली अ बिब्लियोग्राफी. Whereas in APA style, we give the whole reference list at the end of the text, and in MLA also we do the similar. सिर्फ इनके स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में फर्क है. यहाँ पे आप पूरा नाम दे रहे हैं, जॉन माइनार्ड स्मिथ, यहाँ पे स्मिथ जॉन माइनार्ड जैसे हम उसमें दे रहे हैं, एपीए में दे रहे हैं. बट नेचर के बाद यहाँ कोई वॉल्यूम नंबर के पहले कॉमा नहीं है, यहाँ पे जैसे हम उसमें देते हैं. तो वेबसाइट को आपने ऐसे रेफर करना है. जैसे यहाँ पे जब दिया है तो पहले टाइटल ऑफ द पेपर दिया गया है और यहाँ पे गूगल जहाँ से वो पेपर लिया गया है. जो इसकी पेरेंथेटिकल साइटेशन है वो इस बुक इन प्रिंट की इस तरह से रहेगी. ऑथर डेट, excuse me please. Author date style has long been used in physical and natural and social sciences. In this system, sources are briefly cited in parentheses in the text by author's last name and date of publication. The parenthetical citations are amplified in a list of references. Their full bibliographic information is provided. So, यहाँ पे पूरी information दी जा रही है, but here
only the surname, year, and the page from where the citation has been taken from. अब एक अलग तरह की जो citation style है, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स स्टाइल कहा जाता है इनको. इनका भी थोड़ा सा ही फर्क है इसमें रेफरेंसिंग स्टाइल में. So if when they are creating a reference list, title your list as references. ये लोग reference कहते हैं, bibliography नहीं कहते. Title your list as references, either centered or aligned left at the top of the page. This is about how you format the reference का जो title है. Create a hanging indent for each reference with the bracketed number flush with the left side of the page. The hanging indent highlights the numerical sequence of the references. The author's name is listed as first initial, last name. For example, Adil al-Muhari would be cited as A. al-Muhari, not al-Muhari Adil. जैसे या फिर Muhari al-Adil, जो जैसे हम APA या दूसरे स्टाइल्स में करते हैं वैसे नहीं होगा, इस तरह से citation होगा. The title of an article is listed in quotation marks. The title of a journal or book is listed in italics. So, जब in-text citations हो रही हैं, it is not necessary to mention an author's name, pages used, or date of publication in the in-text citation. Instead, refer to the source with a number in a square bracket. For example, like this. So mostly जो साइंसेस के जर्नल्स होते हैं, जब हमारी यूनिवर्सिटी में हमें ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज वी आर इन द फैकल्टी ऑफ साइंस. So science people use this kind of a referencing pattern, but we don't use this kind of a referencing pattern. हमारा होता है APA style. So it's always in a मतलब whenever we are presenting in the board, हमेशा यही सवाल उठता है कि आपका referencing style different है. Most of the time they say you are not a science. वो तो एक अलग बात रही, but हमारा उनका क्योंकि उनके journals में जब publications होती हैं इस तरह का referencing style होता है, और हमारे journals में जब publication होती है तो वो दूसरा style है. तो place bracketed citation within the line of the text before any punctuation with a space before the bracket. Number your source as you cite them in the paper. Once you have referred to a source and given it a number, continue to use that number as you cite that source. So, अगर आप reference number 1 10th पेज पे भी cite कर रहे हो तो वो 1 ही रहेगा, 15th पेज पे भी कर रहे हो तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि एक बंदे को हमने एक नंबर दे दिया है. When citing multiple sources at once, the preferred method is to list each number separately and उसको एक कॉमा से डिमार्केट करना है, या फिर अगर कंटिन्यूअस है 1 2 3 4 5 तो 1 2 5 इस तरह से दिया जा सकता है. So these are the small technicalities which we have to take into consideration when we are using different referencing styles. इस तरह से दिया जाता है ये बुक इन प्रिंट. अगर फर्स्ट ऑथर फर्स्ट रेफरेंस ये है तो उसका डी सरिंग्याते एडिटर्स लेजर न्यूयॉर्क मैग्रो-हिल 1996. 2 चैप्टर इन अ बुक जियो यंग. सो हम ये यंग जियो नहीं लिखेंगे, जियो यंग सीधा रेफरेंस विद फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, title of the paper within quotes, journal, second book, chapter in a book. So plastics करके book है, second edition है उसकी, dot comma, volume 3 किसने बनाई है ये बुक? जे पीटर्स ने एडिट की है, न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई है, मैग्रो-हिल पब्लिशर्स है, 1964 की बुक है, पीपी है उसका dot 15 to 64. So each reference is basically
built in that manner with, जैसे अब ये ई बुक है तो यहाँ ई बुक लिखा है और कहाँ अवेलेबल है ये बुक। जर्नल आर्टिकल है तो उन्होंने वॉल्यूम और पेज नंबर और ईयर जू और वो भी दिया है। वॉल्यूम के बजाय यहाँ पे पूरा नंबर के बजाय जून करके दे दिया है। जिस जर्नल की 4 पब्लिकेशंस होती हैं वो वॉल्यूम 1, 46, 1, 2, 3, 4 ऐसे छपेगा। तो यहाँ इन्होंने उस डेट को ही पूरा दे दिया है, जून में पब्लिश हुआ है और 97 में हुआ है। अगर ई जर्नल है तो अगेन यहाँ तक का रेफरेंस वैसा ही है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन लिख के अवेलेबल कहाँ पे है और उसका पूरा रेफरेंस दिया है और कब एक्सेस किया इन्होंने वो दिया है। इसी तरह ये ई जर्नल का फॉर्म इंटरनेट से अगर लिया है तो उन्होंने साइट दी है, ये बताया है कि ऑनलाइन सीरियल है, जबकि हम बाकी स्टाइल्स में नहीं बता रहे हैं ये सब कुछ, और कौन सी डेट को एक्सेस किया। कॉन्फ्रेंस पेपर है तो जो पूरा पेपर है उसके बाद कौन सी पब्लिकेशन में आया है, कौन उसके कहाँ पब्लिश हुआ है, कौन उसके पब्लिशर हैं और उसका पेज नंबर दिया है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है तो वो भी पूरी डिटेल वैसे ही दी गई है और उसके बाद कॉन्फ्रेंस की डेट और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो देखने वाली है, ये हर एक को एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी आप डिटेल्स में जब करते हो, लिखते हो, तो आपके सामने अगर कोई राइटिंग स्टाइल है और उसकी डिटेल्स हैं तो आराम से हम कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पेटेंट, स्टैंडर्ड, थीसिस, हर एक के लिए अलग अलग तरह से कैसे रेफर करना है वो बताया गया है। This is how it is actually looks like when it is in a book, in a journal, और 4 का मतलब है वॉल्यूम, 2 है वॉल्यूम और 2 है कि कौन सा नंबर है इस पब्लिकेशन, जो चौथा वॉल्यूम है उसका दूसरा नंबर। उसके बाद कॉन्फ्रेंस पेपर्स और वेब से जो लिया गया है वो इस तरह से। Now we come to the citation managers. It is a tool that helps you track articles and books as you find, tag and annotate them, and easily create citations and bibliographies in Microsoft Word, Google Docs, or other writing software. Using any citation manager will be more efficient for most scholars than not using at all. So we must all try to make maximum use of these online sources. तो इनमें सबसे पहले जो एक सोर्स है उसका नाम है Zotero. It's a free open source, easy to use citation management tool to help you collect, organize and cite your research sources. It lives right where you do your work in the web browser itself. Allows you to attach PDFs, notes and images to your citations, organize them into collections for different projects and create bibliographies. तो जैसे मेंडली आपको मैंने खोल के दिखाया था, तो इस तरह से ही हैं ये सारे, और एक बार ही आपका हाथ खुल जाएगा इसके ऊपर, और मे बी मैनी ऑफ यू आर यूजिंग इट ऑलरेडी। तो अब ये ऑनलाइन का यही नुकसान रहता है कि वी कैन नॉट हैव 1-to-1 फेस कन्वर्सेशन, और हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, मगर आप शायद मेंडली ऑलरेडी यूज कर रहे हो या Zotero कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो मैं इसमें तो मैंने आपको बताया कि अगेन पर्पस वही है इसका, मेंडली फॉर डेस्कटॉप। आप इस तरह से इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये सेव होती है और आपके काम आती है। इस तरह से आप इसको, एक मिनट, I hope you are able to listen to it. Yes, ma'am.
तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए मेंडले। मेंडले अपने डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर लीजिए। These are the steps. आपको आते ही होंगे। All young friends are user friendly. You use computers. तो इसके जो भी formalities हैं उसको पूरा कर लीजिए। And then select install. Select finish and leave the checkbox to run Mendeley desktop. So say welcome to Mendeley and you can either log in or register. कर लीजिए। I'm going to make a new account just for illustration purposes. So I'll use my junk test email and yeah, don't bother emailing me here because I never check this email. अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया इस बंदे ने। So once we've input the details, it'll ask for our field of study and our academic status. आप अपना फील्ड चुन लीजिए। So I'm going to select physics and astronomy, and I'm going to select PhD student. इस तरह से अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। And then let's select save and continue. Let's input the email. And let's input the password. And then select sign in. And it'll ask you to import your existing library and to claim your publications. I'm going to skip both of these steps just now. And I'm going to skip the popular physics papers as well. So the first thing I'm going to do now is go to Tools and then install MS Word plugin. So now let's open up Word. MS Word में plugin नहीं install किया। Let's select a blank document and let's go to the reference tab. जब आप कर लोगे तो इस तरह से आपके उसमें आ जाएगा Mendeley। Citation button. And we also have the insert bibliography button, and we also have the style menu. So before actually using Mendeley Desktop with Word, you need to add your documents to Mendeley Desktop. And if you've got your publications that you're interested in reading in PDF format, all you need to do is drag and drop them. ये मैंने आपको करके बताया So है। Mendeley will scan the PDF and it will automatically extract the information from the PDF. Now for journal articles, it's very good, especially if they have a DOI number. This is a digital exhibit when it comes to book chapters, as it automatically assumes that they're a journal article. So this book chapter that I wrote, I added to Mendeley, and you see that it's called the fluorescent spectroscopy and microscopy. That is actually the name of the book. So what I'm going to do is change this type to book section. I'm going to open up the PDF within Mendeley. So let's just cut the name that it's given the book chapter and paste that in book. And from the PDF, we know the title is called Nanometrology. And the authors are David and myself, and that's correct. The year's correct, the volume's correct. And let's get to page numbers now. आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी एंटर हो सकता है। Essentially just scan through the book and get all the relevant edit भी कर सकते हो and just put it into Mendeley from the DOI of all the relevant information. And then select go to Mendeley, my paper 1. Let's go to insert citation and then select go to Mendeley, and let's just pick one of my papers and then select cite. So now let's type my paper 2, and you guessed it,
go to Insert Citation, go to Manually, and then select the second citation that you want to cite. ये देखिए कितना आसान हो गया citations करना. Once you save it in your, let's go to the end of the खुद ही document. format कर लेता वो. And then just type in references. ये APA में ही कर रहा है. You would have all your references. So what you do is select Insert Bibliography. And as I mentioned, you can change the style. And style I want to use isn't there, so I'm going to go to More Styles. And then I'm going to go to Get More Styles. And I want the Institute of Physics, Numeric, and I'm going to install that one. आपको जो स्टाइल चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और डाल. या automatically references बन गए उसके. Using that style just now, so I'll need to go to More Styles again. New 1 and My Paper 2. So assuming the 1 and 2 were manually referenced, and then encountering the problem, oh dear, I found a reference that goes before reference number 1. Well, if I had to manually reference, I would need to change what was 1 to 2 and what was 2 to 3 and etc. etc. So if I had 100 references, this would be very time consuming. But as you see in Manually, everything is sorted automatically. So now let's look at some other commonly used styles in the UK. So I'm going to go to Get More Styles again, and I'm going to, it's just a couple of clicks. If you manually reference, you go to, so now I'm using this numeric referencing style. So you see I've got My Paper 1 and My Paper 2. So assuming the 1 and 2 were manually referenced, I'm asked is what happens if I don't? Kurt and 2 and that 1 and My Paper 1 and My Paper 2. Some friends of mine have been asking me what the best way of managing references. Do the references in Mendeley. तो एक बारी आप यूज करोगे तो उसके बाद आसान हो जाएगा, क्योंकि आखिर ये बने ही हमारी सारी वो रेफरेंसिंग को आसान करने के लिए. एक और जो तरह का है एंड नोट जिसको कहते हैं, is a reference and full text organizer that allows you to create bibliographies and format documents in large number of output styles. It has both a desktop and an online component. इसको EndNote online कहते हैं. Users should create their account from within the desktop version for full functionality, including the ability to synchronize references between desktop and online accounts and share their libraries with other EndNote users. इसका इस तरह से वो है जिनको इंटरेस्ट हो कि कैसे सेव होता है इसका डेटा. Then another of the based bibliography help, we should call it helpers, as and it is RefWorks. That allows you to create your own personal database by importing references from text files, online databases, and other sources. You can use these references in writing papers and automatically format the paper and the bibliography. काम करने का तरीका सबका तकरीबन एक जैसा ही है. Simple and fast. There are two ways to create a bibliography. The first way is click the quote menu from the menu bar and select Create Bibliography from that menu. You'll see your bibliography displayed in the last citation style that you used. The top menu bar now displays citation and scoping options. You
can choose to display a bibliography with all the references in the folder you were in, or you can choose a bibliography with only selected references from that folder. You can change the citation style with the drop-down menu. The menu displays the last 6 most recently used styles, or you can use the edit field to search for one of more than 4,000 citation styles available. When you are happy with the bibliography, click the Copy to Clipboard button and paste it into your word processing document. You can also use the Quick Cite tool to build bibliographies. Quick Cite does much more than bibliography creation, and it is the subject of a different video. It can create footnotes and inline citations. So if you are only interested in building a bibliography, the quickest way is with the Create Bibliography command. To use Quick Cite to build a bibliography, select the folder that contains the relevant references and bring up the Quick Cite tool from the Quote menu. Choose your citation style, then click the Continue button. The next page lists all your references. Here you can copy and paste inline citations by hovering over a reference and clicking the Copy Citation button. To include a reference in your bibliography, click on the star to the right of the title. When you're ready, click the Continue to Bibliography button. And there you have your formatted bibliography. Pretty cool, right? Click the Copy to Clipboard button to copy the bibliography and then paste it in your document. If you use Microsoft Word or Google Docs, RefWorks has more powerful tools that integrate directly into those programs. See the relevant videos on our Google Docs add-in, Write and Cite, or RefWorks Citation Manager. And another one is RIS. ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ. और अगर 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो 2 या 3 या 4 से ज़्यादा तो एट ऑल करके भी आप उनको कर सकते हो. And these are all the references I have used in my presentation. Now over to you for questions. एक और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट है, ये कोप करके कहते हैं, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स है. इसमें भी आप देख सकते हो how to avoid these predatory yourself from predatory publications और किस तरह से आपको बचना है इन चीज़ों के साथ, जिसमें आप वो भी देख सकते हो कि जर्नल्स पब्लिशर्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएं जो प्रेडेटरी पब्लिश करते हैं. और इसके अलावा और क्या दिखाना चाहती थी मैं आपको, ये सब तो मैंने आपके साथ शेयर किया. दिस इज ऑल्सो बुकलेट ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, और इसमें भी आपको बताया गया how to choose a right journal for publication, what are the checklists for selecting an appropriate journal, do the aims and scopes of the journal match that of the research, has the journal published articles of similar nature, what is the journal's peer review process, does the journal reach audiences, and you can read in detail about all these in the UGC Care web page. And from there you can be a good, be saved from all these kinds of predatory kind of journals which are hounding the authors. बहुत बारी हमारे बच्चे कहते हैं इसमें पब्लिश कर लेते हैं मैम, ये एक दिन में पब्लिश हो जाता है. मतलब उस जर्नल की क्वालिटी क्या होगी जो एक दिन में पब्लिश करेगा. और हमारी मजबूरी जितनी भी हो इस तरह की पब्लिकेशंस करके करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा पब्लिकेशन एथिक्स नहीं है अगर हम इस तरह. That's why I'm again and again talking about ethics, because 1, we should not copy from others. 2, if we copy or if we take an idea from somewhere, try to be write in your own words as we understand it. Sometimes we
want to use complex terminology for that. और इस कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी की यूसेज की वजह से हम जो है वो फंस जाते हैं इन कॉपिंग फ्रॉम अदर्स. राइट एज सिंपली एज पॉसिबल. आप देखो अच्छे पब्लिकेशंस हो तो अच्छे जर्नल्स पब्लिश करते हैं. मैं नहीं कहती कि मेरी भी बहुत क्वालिटी पब्लिकेशंस है. आई ट्राई टू राइट क्वालिटी बट समटाइम्स इट डजंट मैच. एंड घबराना नहीं चाहिए if there's a rejection of 1 time, 2 time, 3 time, because ultimately we are in the learning process. अगर हम teachers learn करना बंद कर दें तो we'll stop being teachers, because teacher is always learning and continued learning है. मैंने भी आप लोगों के लिए जब ये लेक्चर तैयार किया तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. तो इसके साथ ही आई थिंक though I still have a lot of time, शिफाली जी ने मुझे 1 बजे तक बोला था, but I think my work is done. I would rather like to listen from you of your publication experiences or your queries about referencing. Thank you so much, Shefali ji. Thank you so much, ma'am. It was indeed a very learning and an informative session. A lot of points and a lot of things to learn from you. And I think a lot of queries has been handled in between the session. बहुत ही simple, बहुत ही fluent, बड़ा ही flow और smooth के अंदर बहुत सारे referencing styles जो various disciplines में use होते हैं, कैसे use करना है, और बहुत छोटी-छोटी बारीकियां जो अक्सर हम भूल जाते हैं citation के अंदर, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से कवर करी है. इसके लिए आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं. और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हम कोई भी एक एक्सपीरियंस अभी ले लेंगे और फिर इसके बाद सेशन यहाँ कंप्लीट करेंगे. हाँ, कोई पॉइंट जो छूट गया हो मुझसे, क्योंकि कोशिश तो मैंने की सारे डिसिप्लिन्स को कवर करने की, बट मे बी आई मे नॉट हैव बीन. नहीं, इट वाज ऑलमोस्ट कवर्ड कि कौन सी साइटेशन कौन से सब्जेक्ट के लिए कहाँ यूज हो रही है और कैसे यूज हो रही है. बहुत ही अच्छे से आपने इसको कवर किया है. आई थिंक छोटा सा मैं कहना चाहूंगी, ग्रामरली करके फ्री सॉफ्टवेयर ही है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए और राइटिंग स्टाइल भी आसान हो जाएगा उससे, और उससे काफी सारी मिस्टेक्स अपनी निकल जाती हैं, ग्रामेटिक जो हमारी रह जाती हैं. तो इतने अगर हम ये यूज कर ले, क्योंकि हम सारे यूजर हैं, मे बी लैंग्वेजेस उनको थोड़ा सा मुश्किल आती हो, अदरवाइज बाकी सारे डिसिप्लिन जो हैं वो कवर्ड ही होते हैं. हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम. और बहुत सारे मतलब हम सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोग रिसर्च पेपर्स और रिसर्च के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सुपरविजन में भी रहते हैं, हम सब लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस जो आते हैं वो होती है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसिंग की. हम समझते हैं कि ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आईपीआर का, कॉपीराइट का बहुत बड़ा एक हिस्सा है. इसके बिना हमारी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है. सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वाज कवर्ड वेरी ब्यूटीफुली बाय यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू on the behalf of the HRDC and on my own personal behalf for accepting my invitation and being there with us in this virtual platform, and hope we will meet soon in an and now I would like to invite Sandeep ji. I also hope that we meet in an offline platform, क्योंकि बहुत चीजें जो करके दिखानी होती हैं वो नहीं हो पाती हैं वो in this, and I would love to look at all of you when I am talking, because that's very important feedback. आपने feedback link share किया ना सबके लिए, तो सबसे important feedback होता है दूसरे को देख के समझना कि हम भी students को देखे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आया पढ़ाने का, ना उनको पढ़ने का मजा आया 2 साल कोरोना में. तो जब देखो एक दूसरे को तो समझ आती है कि जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा मतलब सेम वेवलेंथ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने भी बहुत कुछ आपके साथ साथ ही सीखा. मेंडले मैंने 2 साल से डाउनलोड किया, यूज नहीं कर रही थी, मगर आज मैंने यूज करके देखा. जी, ऐसा ही होता है. हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. इट्स ऑलवेज अ 2-way लर्निंग. It's never one way. Right. And every day we keep on learning something or the other. और हमें बड़ी खुशी हुई
कि आपने जिस चीज को चाहा था और नहीं कर पा रहे थे वो आपका हो गया इसी बहाने। क्योंकि सिखाने से पहले खुद सीखना बहुत, मैं स्वयं में भी यही कहती हूँ सब टीचर्स को, जो मेरे डिपार्टमेंटल स्वयं कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हम अडॉप्ट किया हमने स्वयं ऑनलाइन प्रोग्राम, तो मैं कहती हूँ पहले खुद एक कोर्स में एनरोल हो जाओ, देखो क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं बच्चों को, फिर उनको मोटिवेट करो कि साथ साथ आप भी कोर्स करो, बेशक एग्जाम मत दो मगर साथ साथ काम करते जाओ। यस एग्जैक्टली। और बहुत अच्छी चीजें हैं सीखने करने के लिए, और अब तो जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है टेक्नोलॉजी का, डिसरप्टिव इनोवेशंस का, तो उस तरह से तो देयर इज अ बिग स्कोप फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एंड ग्रो, and this is what we should also learn from you, apart from what you have taught us, that you are a rigorous learner, consistent learner, और never give up, है ना, never give up approach आपकी personality में झलकती है। तो I'm really inspired with that, and I will be looking forward to see you very soon, ma'am. Thank you so much. And I'm hoping to come towards Jammu and Kashmir in the end of this month. I'm planning. Come do meet me. Definitely. Give me a. I'll give you a call. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. And now over to Dr. Sandeep for a formal vote of thanks. लगता है शायद संदीप नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं मैं कर देता हूँ मैम। थैंक्स मैम। प्रोफेसर नीरू शर्मा मैम, जम्मू यूनिवर्सिटी मैम, हमने बहुत कुछ आपसे, अभी हम एक प्रॉमिस ये करते हैं कि वी ट्राई, आगे जो भी पेपर हम करेंगे तो उसमें जो आपने जो बताई है उसमें से मैम 100% तो नहीं, लेकिन कुछ एक 2-3 चीजें पैटर्न हम यदि फॉलो कर पाते हैं कि वो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट रहेगी। आपने बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस के बारे में, फुटनोट्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो सारे जितने भी पार्टिसिपेंट है सबने कुछ न कुछ मैम एक्चुअली में नोट किया होगा कि मैं फ्यूचर में ऐसे करने वाला हूँ, मेरे ऊपर ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है मैं अप्लाई करूंगा, या वो जो ऑप्शन है इसमें से मेरे लिए ये सुटेबल रहेगा। तो 100% नहीं मैम, कोई ना कोई फॉर्मूला हर कोई ना कोई यूज करेगा, ऐसा मैम मेरी सोच है। तो थैंक्स मैम, आप आए, और आगे जब ऑफलाइन में भी नेक्स्ट कमिंग जो कोर्सेज होंगे उनमें हम ट्राई करेंगे मैम, दोबारा फिर आपको रिक्वेस्ट करके अपनी शेफाली मैम से आपको बुलाएंगे। और मैम थैंक्स मैम, शेफाली मैम थैंक्स नीरू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you all of you participants. Thank you. May I leave now? Thank you. Take a break for the lunch and we will reassemble at 1:45 again for the next session. और मेरी आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इंटरेस्टेड हो सेशन को ज्वाइन करने में, जो सीखने में इंटरेस्टेड हो, वीडियोस ऑन रख सकते हो, और सीखने में इंटरेस्टेड हो, केवल वही लोग कनेक्ट करिएगा, बाकी सब लोग लीव कर जाइएगा। जो इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में या अटेंड करने में, प्लीज डोंट ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन। So now we will meet at 1:45. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. फीडबैक लिंक आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, उसको फिल कर दीजिएगा। That will be counted as your attendance for the